Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, Janvi, Kareem Nagar. Okay, so I hope I'm audible and my screen is visible. Okay, so we'll wait for 2-3 minutes and then we will start. Okay. And during this summer vacation, Avanti classes will run. Okay, so use this 2 months very wisely, you can say, because these 2 months are very important for you because it is just a start. So once you will work hard in beginning, then only it will give you extra motivation to do good. Okay, because whenever we are preparing for JEE, NEET or any competitive examination, so initial 2-3 months are very uh, you can say very important, because if you will get demotivated in these 2-3 months, then definitely it will carry forward with you, and definitely in 12th class, in half of the 11th class, you will feel demotivated. So better it is to start from the beginning only. अभी से ही start करो अच्छे से preparation करना, ठीक है? Yeah, okay. You can attend, no issue. But here also you can stay. If the network issue is not great in Zoom, you can also join through YouTube. Okay. Hello, Rupesh sir. How are you? Hi, Rahul. I'm good. Yeah, I'm good. Okay. So tomorrow there will be orientation session about the scholarship, no sir? Yes, correct. About the scholarship, Bikesh sir will be leading this session tomorrow. I'm making you co-host then. Okay. Okay, so hello everyone. Welcome to my class. All the YouTube people and Zoom people, those who are watching. Okay, I hope I am clearly audible and my screen is clearly visible to all of you. Okay. So what about the other subjects in Avanti classes? So see, actually, up to 30th April, we are covering the basic mathematics, fundamental of mathematics. Okay. So actually, your 11th class has not started yet. Before going to the 11th class, we are just giving you the fundamental of mathematics. Okay, because once we will start the physics, so physics teacher will definitely teach you the kinematics, okay, laws of motion and everything. So in that case, there will be a lot of mathematical formula and mathematical concept will be required. Okay, because the first chapter is only about kinematics. Okay, so that's why we need that. So that's why we are trying to cover all the basic portions of maths. Okay, so during your summer vacation, enable class will start and they will share the link with you because you have the WhatsApp group, right? So आप घर पे जाओगे, आपका WhatsApp के थ्रू कनेक्ट होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? YouTube पे भी होता है और Zoom पे भी होता है. आप दोनों जगह से जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप उससे अटेंड कर सकते हो क्लासेस. ओके, बट अभी के लिए बस मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है 30 अप्रैल तक. बट मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई आपको एक शेड्यूल बता दिया जाएगा कि फिजिक्स की क्लासेस कब होगी, केमिस्ट्री कब होगा, मैथ्स कब होगा, और बायो जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है बायो, तो एक शेड्यूल विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू. ओके ओके, सो विल स्टार्ट द क्लास. आई होप इट इज क्लियर कि क्या कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं आगे. बट अभी के लिए 30 अप्रैल तक ओनली बेसिक मैथमेटिक्स. ओके ओके, हेलो JNB Anam, गुड आफ्टरनून.
Okay, so we will start the class. So in the last class, what we were discussing what standard quadratic equation. I have already told you that when we'll start 11th class, we will teach you the quadratic equation in very detailed form. Okay, but for now, we just need the basic things that we have already discussed few. Okay, we have seen in the last class, we have seen the polynomial division, we have seen remainder theorem and factor theorem, and also we have seen what is standard quadratic equation and how to find the roots of it. Okay, we have seen two methods. Okay, so in today's class, we are continuing with that only, and we will also see nature of roots. And in today's in 40-45 minutes class, I will try to cover the all quadratic equations, so that again from the next class we will start some other chapter. Okay, so meanwhile, if you are having any doubt, just let me know through the chat box. Okay, so in the previous class, what we have seen standard quadratic equation, how it look like. Okay, and then we have also seen method of finding its roots. And in today's class, we will also see identity equation. This is very basic things, so later we will see. Okay, so what I have told you, if it is a quadratic equation, then the degree is 2, means the highest power of the variable will be 2. Okay, so there are two categories there. One is purely quadratic equation. We will not talk about that. Means purely quadratic equation means what? There will be no any linear term. Okay, you can say ax square plus c is equals to 0, where linear term means power is 1 is not there. Okay, but in this case, you can see a standard quadratic equation. It is ax square plus bx plus c is equals to 0, where a should not be equals to 0. Okay, so you can see there is x square, there is x also. But why we are calling it quadratic equation? Because the highest degree is 2. Okay, so that's what this is, standard quadratic equation that we have already discussed. Okay, then we have also see, I have told you that if it is a quadratic equation, then there will be certain values. After putting the values in the main quadratic equation, you will get the value as 0. So those kind of value are called as roots or zeros of that quadratic equation. Okay, roots and okay, yeah. Okay, so we have few methods to find the roots. Okay, that we have discussed in the previous class. One is factorization form. Okay, and other one is Sridharacharya method or discriminant method. Okay, so both method I have already explained in the previous classes. Okay, this is very basic. I hope you already know this factorization method in class 10th also. We have seen some of the examples in the previous classes also. Okay, and I have also told you, if it is a quadratic equation, so there can be maximum of, there will be 2 roots. Okay, any kind of root, whether it may be all real, all imaginary. Okay, like that. But a quadratic equation can have 2 roots. Okay, 2 roots, or you can say 2 zeros. So we have also seen how to factorize it. Okay, so I have told you how to factorize it. For that, I have told you, just you have to see this a and this c. Okay, and after multiplying it, it will become -3. Okay, so you have to split this minus 2x in such a way that it will not affect the exact value, but after multiplying both values, we will get -3. Okay, so you can see, if I will write this as, this is 3x square. So if I will write -3x and plus x. So -3x and plus x, it will become -2x, right? And then also if we'll multiply with -3x into x, so it will become -3x square, which is exactly 3x square into -1. So now what we can do? We can take common. So it will become x minus 1, and if I will take 1, then it is x minus 1 is equals to 0. And then what I have told you, after finding this, you have to check whether these both values, common values, are same or not. If it is not same, then it means that we have done something wrong. Okay, then we can write this as collectively 3x plus 1, and then this is x minus 1 is equals to 0.
So there will be two values, either 3x plus 1 can be 0 or x minus 1 can be 0. So one value is x is equals to minus 1 by 3, other one is x is equals to 1. So in this way you can find the factorization method. So is there any problem with the factorization method? Can anybody tell me? Is there any problem? Can you do it right? Can do it ना? बट कर सकते हो ना आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड? देखो मैं रिकॉल ही करा रहा हूं, फिर भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, ठीक है? आपको पहले से पता हो जाना चाहिए, ठीक है? वो भी बताया कि अगर दो, एक अल्फा एक बीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, ओके? एंड देन वी हैव आल्सो सीन कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड अगर आपको नहीं पता है, देन आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट डिस्क्रिमिनेंट मेथड, that is x is equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a. ये रूट के अंदर में जो b square minus 4ac होता है, that is the discriminant value, और यू कैन से ये आपका क्या होता है, d बोलते हैं इसको, ठीक है? ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया d, that is called a discriminant. Okay, so there will be two values. From here also you can find the roots of the quadratic equation. ओके देख सकते हो, एक अगर एक रूट आपने अल्फा माना है तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. द अदर वन इज बीटा, दैट इज माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो देयर आर टू मेथड्स, वन इज फैक्टराइजेशन, अदर वन इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ओके, इन द सेम वे आप फाइंड कर सकते हो, हमने लास्ट क्लास में ये फाइंड भी किया था, 4, -2. जस्ट a b and c की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द रूट्स का वैल्यू, ठीक है? ये भी फाइंड कर सकते हो, नो नीड टू डू इट. ओके, नाउ क्या होता है देखो, सम ऑफ द रूट्स. ओके, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द रूट्स? सो देयर आर रिलेशन बिटवीन the roots. Okay, so there are two things we need to discuss today. One is sum of the roots, another one is product of the roots. So what I will do, how I will find the sum of the roots? So let's suppose this quadratic equation is having roots, one root is alpha and other root is beta. Okay, if one root is alpha and other root is beta, so I have told you, if we will know these two roots, so I can write this quadratic equation in this form, x minus alpha and x minus beta, because we exactly don't know the value, but we have considered that it is alpha and beta. So I can also write this quadratic equation in this form, x minus alpha into x minus beta is equals to 0. Because if we exactly know the value of a, b and c, we can factorize it. But here what happened, उसने सिंपल कांस्टेंट a b c लिखा है, तो हमें वैल्यूज नहीं पता है, बट हम रिलेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं. देखो, तो दो रूट्स है, एक अल्फा है दूसरा बीटा. आई कैन राइट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, एंड इट इज एग्जैक्टली, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. Why? Because ये देख लो आप, क्योंकि इसी का रूट्स है ना. अगर अल्फा बीटा है तो मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं. अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जैसे इसको लिखूंगा, अगर इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा. और ये आपका देखो, अगर आप कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, सो आफ्टर दिस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन लोगे, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेके यहाँ पे x ले लो और ये अल्फा बीटा ले लो. और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो, आप कंपेयर कर सकते हो. आप चाहो तो a को कॉमन लेके इसको लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय. और ये तो एक्चुअल में क्या है, जीरो के इक्वल है ना. अब यहां से आप क्या करो, और इस a को हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने a को कॉमन लिया. बिकॉज दिस साइड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है. तो यहाँ पे a था, तो हमने कंपेयर करने के लिए पहले इसके कोएफिशिएंट को भी 1 कर दिया. तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, इरेज कर देता हूं मैं, हट गया. ओके, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. यहाँ पे देखो, माइनस अगर अल्फा प्लस बीटा ले लो
तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, b/a के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। इज इट क्लियर गाइस? So you can see alpha and beta is what? It is the roots. So if we have to find sum of the roots, I can directly write -b/a. No need to do all these things. We have just done derivation. कि अगर आपके पास ax square plus bx plus c is equals to 0 है और अगर उसका रूट अल्फा एंड बीटा है तो उन दोनों का जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो क्या होता है, सिंपल आप b यहाँ पे खोजो, -b divided by a. So this is sum of the roots. Is it clear everyone? Is it clear? चैट बॉक्स में बताओ क्लियर है सबको? जैन बी करीम नगर, चिन्मयी, जैन बी अनम, भानु द लेजेंड, बताओ बताओ, इज इट क्लियर? ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, सिमिलरली इफ यू विल सी, तो ये अल्फा बीटा एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे c/a भी आपका कांस्टेंट टर्म है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा आपका, c/a। ओके, c/a। ओके, हेलो, क्या यूट्यूब से भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, डेविल क्वीन, थैंक यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा आपका, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट देख सकते हो, c/a इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, व्हेनेवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका c/a होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। देन व्हाट वी नीड टू डिस्कस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। देखो, रूट्स आपको पता है, कोएफिशिएंट आपको पता है, तो ये एक्चुअली कुछ अलग सा टर्म नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स। तो यही तो अभी जो हमने डिस्कस किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a किया ना, तो ये तो रूट्स है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सम ऑफ रूट्स, ओके, एंड आपको पता है कि इफ द इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, then we can say what is b. B is actually coefficient of x. So what I can write, my negative of coefficient of x divided by coefficient of what, x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और b और x का कोएफिशिएंट b है, तो यही हो गया ना रिलेशन, रूट्स का और कोएफिशिएंट का बीच का रिलेशन हो गया। अगर कोई बोले व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो क्या होगा, ये c कांस्टेंट टर्म है, तो आप यहाँ c/a होता है ना, अल्फा बीटा कितना होता है, c/a। तो यू कैन राइट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट विद द कोएफिशिएंट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो the whole summary, you can see if it is ax square plus bx plus c is equals to 0, so there will be two roots alpha and beta. You can find it by the factorization method, and suppose if any equation is not factorizable, then there is only one method, that is discriminant method or Sridharacharya rule. You can use that and you can find alpha and beta, that is -b plus minus root under b square minus 4ac by 2a, where d is b square minus 4ac. Okay, then you have to remember sum of the roots, product of the roots, so that's it. Okay, so इसको ऐसे करके लिखा है, ये अभी तक हमने जो भी आपको है बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कैन एनीबडी टेल मी, नाउ इट्स योर टर्न, बिकॉज मैंने बहुत बोल लिया, तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। कैन एनीबडी टेल मी द आंसर फॉर ऑल दिस थ्री? ओके, जल्दी जल्दी, एक सेकंड मतलब 5-5 सेकंड लगेंगे, देख के ही बता दोगे। जस्ट लेट मी नो व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स?
तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्योंकि हमें जो रेस्ट मिलता है ना, वो तभी तो मिलता है जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हम पानी पी रहे हैं। अभी आप बताओगे नहीं तो हमें लगेगा, ठीक है ना। जब हमें ऑफलाइन में टीचर्स पढ़ाते हैं तो फिर वही होता है ना, टास्क दे के फिर वो घूमने चले जाते हैं थोड़ा बहुत। ऑनलाइन में तो वो लग्जरी नहीं है। -b/a। हाँ, हाँ, सम ऑफ द रूट्स देखो आपका 3 हो जाएगा। वेरी गुड। बिकॉज -b/, पहले क्या करो, जब भी ऐसा कुछ आए ना, आप एक काम करो, पहले a b एंड c लिख लो। a आपका देखो कितना हो जाएगा 3, b देख लोगे तो ये आपका हो जाएगा -9, एंड c देख लो तो आपका हो जाएगा 8। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, सो इट इज माइनस ऑफ -9/3, सो इट इज 3। ओके, वेरी गुड भानु, जनवी, करीमनगर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/8/3 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, b² - 4ac। क्या हो गया, b कितना था, -9, 81 -15, -15। अच्छा, ये तो रूट नहीं है, रूट नहीं है, मैं तो गलत लिख दिया, ये रूट नहीं है। -4a कितना हो गया 3, और ये आपका कितना हो गया c 8 हो गया 8, 81 -96, हाँ -50, या 17, 81 हो गया ना, इधर 4 × 3 देख लो, चेक कर लो, 96 है ना ये, तो -15 होगा। ओके, चलो जो भी है, बहुत बेसिक सा था, आपको हो जाना चाहिए। ओके ओके, सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है आई गेस। हाँ, वेरी गुड, डेविल क्वीन 3,8/3। डिस्क्रिमिनेंट भी बस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज b² - 4ac। ठीक है, पुट करो वैल्यू, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये मैं करवा नहीं रहा हूं, आप लोग कर सकते हो आराम से, मुझे पता है। ठीक है, अब एक काम, अब देखो यहाँ पे, अगर आपने कभी आप लोग मॉडुलस के बारे में पढ़े हो क्या, मॉडुलस के बारे में? ठीक है, मॉडुलस के बारे में कौन कौन जानता है, व्हाट इज दिस वैल्यू मॉड? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस मॉड वैल्यू? अगर ये आइडिया नहीं है तो वी कैन स्किप दिस। ओके, उसके बाद जब हम लोग मॉडुलस का फंक्शन, बिकॉज वंस आई विल स्टार्ट द फंक्शन, आई विल टॉक अबाउट ऑल द ग्राफ्स। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एवरी फंक्शन आई विल डिस्कस इन द डिटेल। ओके, एक पूरा क्लास पूरा ग्राफ के बारे में होगा, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अभी क्या है कि अगर मान लो मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल ऐसा कर दिया, ओके, देन आपको अगर कोई बोले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तुरंत बोल दोगे 5/9, बिकॉज c/8, राइट। बट वंस वी विल पुट mod, so there are certain properties of mod is involved। ओके, सो उसके लिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो when there is a mod sign, so if I will put negative value then it will give positive value, and if I will put positive it will also give positive, whatever you are giving। ठीक है, अगर -2 भी करोगे तो 2 निकलेगा, और 2 भी करोगे तो 2 ही निकलेगा, ऑलवेज इट गिव पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो मे बी इसलिए डिटेल में आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो तरीके का काम करता है, जब x पॉजिटिव है तो कुछ अलग वैल्यू होता है, x नेगेटिव है तो कुछ अलग वैल्यू होता है। बट मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ था, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली वंस आई विल डिस्कस दैट, वहां पे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए रहने दो, क्योंकि अगर मान लो किसी को मॉडुलस के बारे में आ भी रहा होगा बट सबको आइडिया नहीं होगा। ओके, बट ये वो समझ जाओगे तो एकदम 1 सेकंड में चुटकी में बन जाएगा ये। ओके, देखेंगे इसको बाद में। ओके, सो चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। ओके, व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स? लाइक क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट। बट what are the roots? Okay, whatever the roots are coming,
व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स, राइट, बिकॉज रूट्स क्या आते हैं, कुछ वैल्यूज आते हैं 2 3 1/3 -1/3 ऐसा करके कुछ आ रहा था, ओके, सो वो नंबर ही आ रहे थे कुछ, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है, बहुत सारे तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, बहुत तरह के नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत तरह की चीजें हमने पढ़ी है। तो अब वही हमें बताना है कि जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर द नेचर ऑफ दोज रूट्स, वेदर बोथ रूट्स, क्योंकि दो ही रूट्स होंगे, दो से ज्यादा होगा नहीं, मैक्स 2 रूट्स आर देयर, सो वेदर ऑल 2 रूट्स विल बी अ रियल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम बेस्ड ऑन दैट वी विल सी कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स देख सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, whenever कोई बोल रहा है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, यू जस्ट हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ओके, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका आपको वैल्यू चेक करना है। एंड इफ द वैल्यू इज, पहले डी की वैल्यू निकाल लो, एंड अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी है जिसको हम डी बोलते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोलते हैं कि रूट्स जो होंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट में 2 रूट्स आएंगे, दोनों रियल भी होंगे और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, रियल नंबर तो आपको पता ही है ना। सो ये चेक, आप बोलोगे कैसे, सो देखो, हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला आपको बताया था रूट्स निकालने के लिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब देखो इसके अंदर की जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी डी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन ओनली ये रूट निकलेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट एटलीस्ट इफ इट इज अ पॉजिटिव नंबर देन ओनली वी कैन गेट एनी नंबर, राइट, क्योंकि रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आ गया देन इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव बाहर आएगा नहीं। ओके, जब बाहर नहीं आएगा सो वी कांट टॉक अबाउट इट। सो डेफिनेटली अगर रूट के अंदर में मान लो 4 है तो 2 हो जाएगा, अगर मान लो 7 है तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, रूट 7 इज इरेशनल नंबर बट स्टिल इट इज अ रियल नंबर। Okay, so for that you just have to remember that if discriminant value is greater than 0, then whatever the roots are coming, both the roots will be real and distinct. ओके, सो इसके लिए अगर मुझे इसका कोई बोले चेक करने के लिए, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वैल्यू फाइंड करो, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो b कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, इट इज 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 से तो ग्रेटर ही है जो भी डी की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, इट विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, और वो दोनों रूट्स आपको पता ही है, आप चाहो तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का रूट भी निकाल सकते हो, आपको फैक्टराइजेशन मेथड अभी हमने पढ़ाया है ना। सो इफ यू विल सी देयर विल बी टू रूट्स, एक -2 आएगा और एक -3 आएगा। ओके, 2 3 two roots will be there and both are what, both are real and distinct. Okay, so d is greater than 0, then roots are real and distinct, और यही जो real and distinct है इसी को तो नेचर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अब कोई स्टूडेंट है तो किसी को बोलते हैं अरे ये सिंपल है, किसी को बोलते हैं अरे ये स्टाइलिश है, ठीक है, तो वो नेचर के वाइज से बोलते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे रूट्स में भी रियल है, डिस्टिंक्ट है। ओके, अब देखो, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आई शुड हैव टेकन अच्छा एग्जाम्पल, पर जो मन में आए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है,
कि यहीं पे एक और होता है कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, d एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए, d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसमें क्या होगा, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट के अंदर में अगर d रहेगा तो कंप्लीटली अ रियल वैल्यू विल बी आउट। ओके, एक परफेक्ट वैल्यू बाहर आएगा। उसमें क्या होगा, अगर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और d मान लो 7 होता तो वो इरेशनल रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड देन वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर दैट इज d इज परफेक्ट स्क्वायर, देन इसमें भी क्या होता है, होता तो वही है कि रियल भी रहता है and you can say it is distinct also, but in real there are two things, right? एक होता है आपका रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। ओके, सो कंडीशन वही है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, एंड d इज ग्रेटर देन 0 के साथ अगर यहां पे बोल दे कि d जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, और एक बोल दे कि d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो व्हाट यू कैन से इट इज रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर में यू कैन से रैशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट विल नॉट कम आउट, राइट, रूट विल नॉट कम आउट, और ये रूट 7 रूट 11 रूट 13 ऐसा करके देन वी कैन से दैट इट इज इरेशनल। इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट तो रहेगा ही because already d is greater than 0. Okay, so I hope it is clear. d is greater than 0 means real and distinct, and again agar bole ki d is also a perfect square then we will say it is a rational, and if d is not a perfect square then it is irrational. Okay, so isme bhi do branches divide ho gaye. So is it clear everyone? Thank you. Is it clear? परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज ग्रेटर देन 0 का हो गया। ओके, नाउ नॉट परफेक्ट स्क्वायर मींस irrational and distinct that I have discussed. Okay, now in this case you can definitely say, okay, जल्दी जल्दी से बताओ what is the answer for this? Okay, इसमें देख सकते हो d स्क्वायर क्या हो गया, -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ये आपका 8 हो गया, -4 हो गया, सो इट इज 4। ओके, एंड 4 है। अब ये देखो ग्रेटर देन 0 है, सो d इज ग्रेटर देन 0, राइट, और d कितने के इक्वल आया, 4 के इक्वल, जो कि ग्रेटर देन 0 है, एंड इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर वी विल से दैट it is rational and distinct. Okay, real means d is greater than 0, but also if it is perfect then rational and distinct. Okay, okay, so now ठीक है, सब में देख सकते हो। okay, irrational and different, have to see irrational and distinct, minus b by a, minus b by a it means बोलना चाह रहा है 2√2। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, और मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता भी दिया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि कभी कभी ये चीजें गलत भी हो जाती। क्यों, देखो, क्योंकि ये तो दो कंडीशन हमने देख लिया, वी हैव सीन टू कंडीशन जहां पे d इज ग्रेटर देन 0 आल्सो एंड d इज इक्वल्स टू 4, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो, सो बेस्ड ऑन द थ्योरी इट शुड बी रैशनल एंड डिफरेंट। ओके, बट यहाँ पे इरेशनल क्यों बोल रहा है, बिकॉज वी नो दैट अगर हमने अल्फा प्लस बीटा किया देयर आर टू रूट, डेफिनेटली इट विल बी माइनस बी बाय ए, सो माइनस बी बाय ए करोगे तो माइनस ऑफ -2√2 बाय ए दैट इज 1, सो माइनस माइनस ये 2√2 आ गया, एंड यू कैन से 2√2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, सो किसी भी दो रैशनल नंबर का सम इरेशनल तो कभी नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा अगर दो इरेशनल नंबर है दोनों का सम इरेशनल नहीं हो पाएगा। ओके, उसके लिए एक ना एक को इरेशनल होना पड़ेगा। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल, मतलब दो रैशनल का सम इरेशनल नहीं हो सकता, सो डेफिनेटली समटाइम्स इट विल कॉन्ट्राडिक्ट।
So that's why we have taken this example, irrational and different. Okay, but based on the property it should be rational, but एक और हमने check कर लिया because there are irrational number in the coefficient. Okay, so we have to check for the this also. Okay, बाकी अभी और तीसरी कंडीशंस देखोगे तो आपको पता चलेगा. और फिर देखो, if d is great equals to 0, हमने देख लिया d is greater than 0. अगर d equals to 0 हो जाए, d is equals to 0 हो जाएगा, then both root will be equal. कैसे? देखो, आपको पता है कि x is equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a होता है. And if d is equals to 0 means this will become 0. जब ये 0 हो गया तो ये माइनस बी बाई 2a ही हो जाएगा ना, बिकॉज प्लस माइनस 0 तो प्लस माइनस 0 तो माइनस बी होगा. सो देयर विल बी ओनली वन रूट. सो हम बोलेंगे बट वी ऑलरेडी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रूट. ओके, सो इफ इट इज टू रूट देन वी ऑलवेज से दैट कि it will give real roots, but only we are getting one value. So we are saying that ki both roots are equal. Both roots are equal. क्योंकि एक ही रूट आ रहा है ना, so both roots are equal. Roots are real and equal. Okay, so you can see x square minus 4x plus 4. If you will find d, so you will get d is equals to 0 only, because minus 4 का whole square minus 4 into 1 into 4, so it will give 0. So if discriminant value is 0, then roots will be equal and real. Okay, ये होता है आपका d is equals to 0 में. Okay, and then if d is less than 0, then problem हो जाती है. If d is less than 0, then we will say that the roots are not real. Not real, or you can also say imaginary, and you can also say complex roots. Okay, सब एक ही नाम है, because we know that if d is less than 0, तो जब d less than 0 होगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में यहाँ पे डी ही लिख देता हूं. सो इफ इट इज लेस देन 0, देन निगेटिव रूट अंडर निगेटिव नंबर. सो यू ऑलरेडी नो, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा हमने देखा है कि निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इज व्हाट? इट इज अ इमेजिनरी नंबर, राइट, और कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दैट्स व्हाई अगर डी लेस देन 0 हो जाए, सो रूट्स जो हो जाते हैं वो नॉट रियल, यू कैन से इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट ऑल्सो. Okay, so in this case if you will find d value, it will be minus 4 ka whole square minus 4 into 1 into 8, so it is 16 minus 32, that is minus 16, and it is less than 0. So if it is less than 0, we can directly say that it will give non-real complex root. Okay, is it clear everyone? Is it clear? So three things we have seen. If d is greater than 0, if d is equals to 0, and if d is less than 0. So you can see here the complete summary. Just for the nature of roots, for finding the nature of roots, you just have to check that discriminant value, that is b square minus 4ac. If it is greater than 0, then roots are real and distinct. There are two cases. Again, we have to check whether d is a perfect square or not. If it is a perfect square, then roots are rational and distinct, apart from some exception that we have seen. And if d is not a perfect square, then roots are irrational and distinct. If d is equals to 0, then roots are real and equal, and both values is minus b by 2a, because d part will be 0. And if d is less than 0, then roots are imaginary and distinct, or you can say complex conjugate. Okay, what is complex conjugate? We will also see in the next slide. Okay, complex conjugate क्या होता है? अभी ये nature of roots हमने देखा था अभी कुछ देर पहले, उसमें देखा था roots are irrational and distinct. अब क्या होता है कि आप एक चीज देखो, ये दो याद रखना आप, ठीक है? ये दो चीजें बता के मैं क्लास को फिनिश कर दूंगा कि अगर if there is a quadratic equation and already we know that one root is p plus root q, then second there is no need to find the second root. You can directly write other root will be p minus root. अगर मान लो एक ax square plus bx plus c is equals to 0 है, और इसका एक रूट 2 plus root 3 है,
then other root definitely 2 minus root 3 ही होगा. There is no other option. ओके और अगर ये 2 प्लस रूट 3 है तो जब माइनस कर देते तो हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं? कंजुगेट बोलते हैं. कंजुगेट टू ईच अदर. ओके 2 प्लस रूट 3 एंड देन माइनस कर दिया 2 माइनस रूट 3. ये इसका कंजुगेट है और ये इसका कंजुगेट है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप देखो तो जब हम रूट्स लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है. ओके सो अगर ये डी बाहर नहीं निकला तो अगर एक आ रहा है आपका ऐसा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? ऐसा ही होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस है और अगर पूरी तरह से बाहर आ गया तब तो वो रैशनल बन जाता है. ओके सो दैट्स व्हाई इफ इट इज नॉट कमिंग as प्रॉपर रैशनल नंबर और ये रूट क्यों ही रह रहा है इरेशनल नंबर में, सो दूसरा उसका कंजुगेट ही होगा और देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर if for any quadratic equation if one root is suppose 7 plus root 3 then other root will be definitely 7 minus root 3. एक्स्ट्रा फैक्टराइजेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्लू ले सकते हो. ओके एंड द अदर वन इज कि अगर मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट आ जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट मींस p प्लस आई क्यू, देन द अदर रूट विल बी इसका कॉन्जुगेट होगा p माइनस आई क्यू. यानी अगर कॉम्प्लेक्स रूट है जैसे कि अगर मान लो हमने ऐसे कुछ निकाला और -2 आ गया प्लस माइनस रूट अंडर -3 आ गया, ठीक है, या ऐसा कर देते हैं, मैं हल्का सा मिटा देता हूं यहाँ पे, रूट माइनस की जगह यहाँ पे 9 ले रहा हूं. सो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज डी वैल्यू? डी इज -9 एंड इट इज लेस देन 0. इट मींस व्हाट? डेफिनेटली इट विल गिव व्हाट? इमेजिनरी रूट्स. अब इमेजिनरी रूट्स देगा, सो वी ऑलरेडी नो दैट आई कैन राइट इन दिस फॉर्म प्लस माइनस दिस इज 9 राइट. सो इफ दिस इज 9 इट विल बी 3 बाहर आ जाएगा रूट अंडर -1. एंड व्हाट इज रूट अंडर -1? इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, ठीक है, आयोटा. सो इट इज व्हाट x इज इक्वल टू -2 प्लस -3i. सो यहां से देखो दो आ रहे हैं इसके, एक आ रहा है -2 प्लस 3i एंड अदर वन इज -2 माइनस 3i. सो यू कैन से अगर इसको p प्लस आई क्यू लिखते हो तो दूसरा आपका p माइनस आई क्यू हो जाएगा. सो वेदर इट इज अ इरेशनल रूट्स वहां पे भी कंजुगेट पेयर बनते हैं एंड फॉर द केस ऑफ इमेजिनरी रूट्स आल्सो देयर विल बी conjugate pair. Okay, if one is -2 plus 3i, other one is 2 minus 3i. If suppose one root is 7 minus 4i, the other will be 7 plus 4i. Okay, it will be conjugate to each other. So these two are very important just to remember, so that कि आपको अगर एक भी पता हो तो दूसरा डायरेक्टली यू कैन राइट. ओके सो okay so higher degree equation we will talk about it later, but अभी के लिए बस ये बता दे रहा हूं कि अगर मान लो हायर डिग्री मींस क्यूबिक है, ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0. okay so this is cubic equation. okay where degree is what? 3. so अगर 3 होता है तो ऑलरेडी हमने क्या बोला है? there will be 3 roots. just like in the quadratic equation there are 2 roots alpha and beta, here also there will be 3 roots, that is alpha, beta and third one is gamma. We can also write it in this form: x minus alpha, x minus beta and x minus gamma, and that is equals to 0. And after expanding and comparing with this, then there will be a relation that sum of all the roots alpha plus beta plus gamma is what? minus b by a. Then we will take 2 roots at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, it is equals to c by a, and then alpha into beta into gamma, product of all the roots, it will be d by a. So just like this, there is a formula for this. I will just expand it and just compare with this ax cube plus bx square plus cx plus d, you will get all the desired results. Okay, for the cubic equation, for the in the next class in 10 minutes I will try to explain it. Similarly, for the biquadratic also you can write ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, ऐसा करके आप सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, अल्फा बीटा गामा एंड कोई फाइव ले लो, 4.
variable. Okay, so that's all about today's class, guys. I hope आपको समझ में आया होगा. For now, I am just doing few problems, few examples. I am not doing any competitive type of questions. When we will finish all the things, then definitely we will keep 1 or 2 problem solving class also, so that ki सारा concept आपको उस समय ज़्यादा clear होगा. For now, I am just teaching you theories. I'm making you aware about all the theories. So that's it for the today's class, guys. Thank you. If you have any doubt, just let me know. Okay. Chinmay ma'am is there. I'm making that progress. Okay, so that's it for the today's class. If you have any doubt, just let me know. किसी को कोई doubt है? Janvi Anam, Bhanu the Legend, Devil Queen, Janvi, Janvi Nalgonda, Karimnagar. Okay, so Rupesh sir. Rupesh sir is not here. Chinmay? Yes. Yes, Rahul. Okay. So just shall I share the screen? Okay, okay. So very good afternoon, everyone. Good afternoon, students. Well, so first let me introduce myself and then we'll begin with our session today. So I'm Chinmayi Remit. I'm a mathematics faculty in Avanti Fellows, and it's almost been 2 years I'm working with Avanti. Yes, and I'm completed my graduation in mathematics from Central University of Karnataka. With me, I also have my friend Shubham. So over to Shubham. Yeah, good afternoon, all of you. This is Shubham this side. Okay, so I'm working in Avanti since 2 years. Okay, I'm teaching chemistry here in Avanti. So I have completed my master's from NIT Warangal itself, which is located in the Hyderabad. I think Karimnagar students know about it. Where is the NIT Warangal? Or what is the NIT Warangal? Okay. So today we'll orient about some different things apart from JEE and NEET. Okay, so what are the other options in your if you choose different careers or if you want to go to the different parts? Okay, so Chinmay will start and we'll Cool. discuss the things. Okay. Yeah. So this is today's agenda. Well, in your previous sessions, in previous career guidance sessions, you have learned about so many medical colleges, engineering colleges, the campus life of those colleges. You also learned about many courses associated with engineering and medical field, right? So in our today's session, we learn about what are the central universities, how can we get into these universities, what are RIs, and also about the research opportunities that you can have after completing your graduation. So are you all ready for the session? So if yes, then yeah, please send smiley emojis in the chat box so that we can get to know that you're ready. Okay. Cool then. So let's begin. Okay. Yeah. So let's begin with the question, what are the central universities? So any of you know what are the central universities? Any university name that you can remember? If yes, then you can write it in the chat box. Cool. So yes, the central universities are the public universities which are established to provide higher education to the students. So what do we mean by higher education? By that, we mean a post-graduation, PhD courses, and the graduation in different streams. Okay. These universities are funded by central government.
just like how NITs and IITs are funded by central government. The campus life, the infrastructure and the facilities in these universities will be quite similar to the NITs and IITs. You already seen the campus life of this NITs and IITs in previous sessions, right? So the campus and all, you can find it quite similar. Well, so totally there are 54 central universities in overall India. Among that, I have listed few of the universities here. So among this, the well-known universities are Banaras Hindu University, JNU, that is Jawaharlal Nehru University, then Aligarh Muslim University, Central University of Karnataka, and many more. So these are the pictures of few universities. Here you can observe Delhi University in the top, and BHU, that is Banaras Hindu University, and Jawaharlal Nehru University. So yeah. Well, as I said previously, the campus life facility infrastructure will be quite similar to that of IITs and NITs. But what the question arises here, like what makes them different from IITs and NITs? So it's the courses that they offer. In the case of NITs and IITs, they only offer science stream courses. But here in the central universities, you can find all the three streams, that is science, arts, as well as commerce. Say you want to pursue a career in the basic science, then you can go for the courses like BSc, MSc. So what is the use of studying this BSc, MSc? What are the opportunities that you have after this? So after doing BSc and MSc, you have so many opportunities. You can go for the teaching field, or you can go for the companies, and you can also do a researches. This research part will be covered further by Shubham. So we'll let you know. Now, yeah, apart from the science, you can also go for this art as well as commerce courses. Cool. Okay. So now you got to know about this central universities, right? What are the central universities? What are the courses they offer? Now, if you want to take up admission in these courses, what you can do? How can you get into such universities? Well, so here where the CUET comes into picture. CUET is nothing but it's an entrance test conducted to get admission in the central universities. So basically CUET is a computer-based test, that is online test, and test pattern is objective type. Like it consists of a multiple choice questions. So any candidate who is applying for CUET can choose up to 10 subjects for giving the exam. And choosing of subjects depends on the university and courses you are choosing. For example, let me say you are choosing BSc in botany in Delhi University. For that, you have to write exams of physics, chemistry, and biology. So if you're writing these exams and clearing the cutoffs of this exam, then you will be eligible to apply for the BSc course in that particular university. Therefore, whatever the subject that you're choosing, it depends on the university and the course you're choosing. And maximum number of subjects you can choose will be 10 subjects. And these subjects are divided into 3 sections. Okay. First section is languages. Second section is domain subject, and the third section is general test. So this languages consist of totally 33 subjects, like English, Kannada, Hindi, so many. And the duration of the exam for this language test will be 45 minutes. You will be having totally 50 questions in which you have to attempt 40 questions. And this domain subject consists of totally 27 subjects. So what is this domain subject? It is nothing but a core subject that you're choosing. For example, physics, chemistry, maths, political science, so on. So this domain subject section, if you're choosing a domain subject, then it consists of 45 minutes duration exam. So there will be 45 or 50 questions in the exam, in which you have to attempt 35 or around 40 questions. And the general test, the last part, if you're choosing a general test as a subject, then it consists of 60 questions overall, in which you have to attempt 50 questions.
And the duration of that exam will be 60 minutes. So syllabus, coming to the syllabus of this, all the subjects. In the languages, it will be a grammar part, vocabulary, passage reading, etc. And coming to the domain subject, that is physics, chemistry, this subject, syllabus will be completely 12th standard syllabus. And the general test syllabus will be the normal current affairs, general knowledge, quantitative aptitude, this many things. Okay. And this exam will also have a negative marking. If you answer the question correctly, then that question will carry 5 marks. If you answer it incorrectly, then -1 marks. And if you're not attempting that question, then no marks will be awarded to that question. Okay. So, chalo. So yeah, now you understood what is the CUET exam, what is the pattern of this exam, what's the scheme of examination and everything. So when can you apply for this exam? So you can apply for this exam when you are pursuing 12th standard. The application will open in the month of February or March. And exam will be conducted in the month of May. So you can keep on checking the website, that is CUET website, in the month of February or March, so that you can apply it at the right time. So yeah. So this is about the CUET. So do you have any questions? If you have any questions, then let me know. Okay. Good. So if there are no question, then we'll move ahead to the next part. Next is about RI. So what is this RI? It's a Regional Institute of Education. So it is the institute which offer courses for those students who want to pursue career in the field of teaching or education. So if you want to be a teacher, you want to pursue a career in teaching, then I can say RI is the best institute you can choose. But in India, there are totally 5 RIs. That is RI Ajmer, RI Bhopal, RI Mysore, RI Bhubaneswar, and RI Shillong. Under this RIs, certain states will be associated. For example, if I consider RI Mysore, then in RI Mysore, the students who are studying in Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh can take admission. So in this way, each region, that each RI will cover certain region of India. So the courses offered in RI are BA B.Ed course. It's an integrated course. BSc B.Ed, B.Ed course, M.Ed, as well as B.Ed M.Ed course. This BA B.Ed course is an integrated course of 4 years. You can apply for it just after your 12th. Similarly, the BSc B.Ed course. And M.Ed you can do after completion of B.Ed. Well, next you got to know what is this RI. So the question arises, how can we get an admission here? Of course, as it's one of the premium institute, it has an entrance exam to get into it. And that entrance exam is nothing but RICE. That is RI Common Entrance Examination. So this entrance exam is an offline exam. So unlike in CUET, you have to write around like maximum number of 10 subjects there as a paper. But here you will have only single paper. This single paper consists of the 3 sections. Okay. The one section is language proficiency, then teaching aptitude, then reasoning ability. So this there will be 20 questions on this language proficiency, 30 questions on this teaching aptitude, and 30 questions on reasoning ability. So total duration of this exam will be 2 hours. Well, and coming to like during admission, 60% of the marks will be considered from this entrance exam and 40% will be considered from the 12th, the CBSE exam that you write. And even this exam has a negative marking. So if you're attempting the question correctly, then you will be getting 2 marks. And for the negative, for a wrong answer, 0.5 marks will be deducted. And if you're not attending any question, then no marks will be given to it.
And coming to the syllabus, it's a basic syllabus. No 12, the one advantage of RI is no 12 syllabus will be related to it. So in the language proficiency, you have to learn about what? English grammar, vocabulary, passage reading, rearranging the sentences, etc. And in the teaching aptitude, you'll have some situation-based questions. And in the reasoning ability, you can study about what? Missing numbers and some non-verbal and verbal reasoning questions. So this is about the syllabus of this entrance exam. Now, as you got to know what is this RI entrance exam, so when can you apply for this? Same thing, you can apply for this entrance exam when you're studying in the 12th. So applications for this will open in the month of April or May, and the exam will be conducted in the month of July. So this is about the RI exam. So any questions from this? Any doubts? Okay, cool then. So if no doubts in this both the exams, that is UET and RI, next part will be about the researches that will be continued by Shubham. So over to Shubham. Yeah, thank you. So Chinmay, can you operate the PPT? Yes, yes. Next. Yeah. So yeah, research, no? So what is research? The research is nothing but the pursuit of knowledge or the new knowledge. If we are doing some experiments and all these things, so we'll tell about the research that if you are going to discover new things, okay. If you know about that Dalton's atom theory, okay, that is a research. He research about the atoms and he uses his theory, Dalton's atom theory. If you see about the gravitational force, that who gave the theory of gravitational force? Newton. Einstein gives the theory of what I can say that that kinetic theory of gases was given by the other people, and Einstein gives the theory of, I can say, the photoelectric effect. So these are the different things which is given by the different scientists, and what we call it as a research. Okay, so research is basically the having the knowledge or gaining the knowledge by doing continuous experiment on the things, what we call as a research. Okay, so I think everybody is curious about what is happening inside the atoms or what is happening inside the ball. If I throw the ball, what will happen? If I throw the water, what will happen? These are the things we are doing in the lab. We call it as a research. Okay, so Chinmay, go to the next slide. Please. Chinmay, are you there? Chinmay. Okay, so all we know, okay, who discovered the gravitational force or gravitational force of attraction? So could you please tell me who discovered the gravitational force of attraction, or who gave the term gravitational things? Can anyone tell me who gave the gravitational force in the chat box, or you can start your, okay, you can unmute yourself and you can tell me who discovered the gravitational force. The guy in the picture is there. What is his name? Anyone have idea about it? Chalo, I will suggest one thing. His name start with the N. His name start with the N. Can anybody? Jenvi Karimnagar, Jenvi Nalgonda, Yanam. Anyone? Yeah, correct. Okay, Newton has given the gravitational theory, or he gives the terms gravitation. Okay, so earlier what happens in earlier days, or I can say in ancient days, in old days, people are not going to the lab. They're just observing the nature and they are giving their theories. Okay, the Newton was not in the lab. Okay, he was observing the nature, he was studying, and this apple fall on his head, and he just analyzed it and he observed it and he gave his theory as a gravitational force. So that day we didn't require the labs, we didn't require a proper discipline to discover the things. But right now in our current generation, or I can say in our ancestor 2-3 generations back, okay, so we got a discipline in the research. Okay, that's why we develop labs and that's why we develop institutes. Okay, so if you want, anyone wants to do a research in anything,
So there is a plenty of opportunities, plenty of labs are there in the all over the world, or I can say in India. Okay, so we'll see the what are the institutes was developed by the Indian government to fulfill the mind or fulfill the curiosity of the young kids or young generation of the India. So we'll see the which are the research opportunities are there in India. So Chinmay, could you please to the next slide? Okay, so these are the plenty research opportunities of India. So if you confuse with the lots of logo, you have to confuse because there are plenty of opportunities are in India. First is the Indian Institute of Science, which is located in the Bangalore. Okay, it was formed by the Jamshedji Tata. Okay, it is a institute which is formed in the pre-independent era. Okay, so that was a British rule there. So they found this Indian Institute of Science. After that, if you see the 8 logos, okay, 7 logos. So these are the ICER. So these are the very prominent, or I can say dominant research institute in the all over the India, which is okay, are available across the India. Next thing is that TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, which is located in the Maharashtra itself, Mumbai, and another city in the Maharashtra called as Tuldapur. So these things are TIFR are located in the Maharashtra, or all of you know who is the Homi Baba. Okay, so Homi Baba is the father of atomic energy in India. So on his name, there is one research center in the field of atomic energy, or I can say nuclear energy, which is located in the Mumbai. We call it as a BAR. Okay, Baba Atomic Research Center. Okay, and along with these prominent institutes, we have universities, as Chinmay has told you, central universities. Central universities also providing the research along with the state universities. If I say the Usmania University, Hyderabad, or I have studied in the NIT Warangal. So there are also a research. So all the IITs, NITs, and all the state universities, Usmania University of Hyderabad, or I can say Savitribai Phule Pune University, Maharashtra, or I can say Delhi University, Delhi. So all these are institutes which are giving the very good opportunity to do a research. Okay, so we got the idea about what is research and where we can do the research in India. Okay, so we'll get idea about the how do we get into these institutes. Okay, so these are the institutes which have they will give some entries on graduation or after the masters. So we'll see the which are the exams are there. So you can go to this institute. The first exam is after BSc is the JAM, Joint Admission Test for MSc. Okay, so I'm not going that deeply what is that exam and how it works, but I'm giving the glimpse of the exam, Joint Admission Test for MSc, or I can say masters. So this exam is conducted after the graduation. If you completed your BSc in home science or honors, so we'll have this exam to get into the IITs and NITs. Okay, so if you miss the chance, not getting chance to the IITs and NITs after the 12th, here is another opportunity for you to get into the IITs and NITs. So this exam, if you clear this exam, some institutes provide you a integrated program. Integrated program in the sense MSc plus PhD. Okay, so what we call PhD, PhD is nothing but the research. Right? So they will give the plenty amounts of money, plenty amounts of time. They will invest your time. They will invest you some amount of money. So you will be along with that research topic for 5 to 6 years, and they will give a doctorate at the end of the day. So that is PhD, what we call as a research. Okay, so this JAM exam enable you to give or pursue research along with your MSc. So this exam is for the integrated MSc plus PhD. So some institute offers MSc plus PhD, some institute offers MSc. Okay, so again, that if we have a good JAM score, that another the energy sector, I think all of you know how much energy we needed in day-to-day life. So there is another opportunity of after the JAM exam in IIT Bombay. So they are giving the PhD in energy sector, which is very crucial nowadays. Energy sector is very crucial nowadays. So they have a tie-up with the other abroad universities, and they will provide you opportunity to do a research in energy. Okay, so this JAM exam is after your bachelor's. If I go after the masters, okay, I'm not talking about after 11th and 12th. Okay, I'm talking about the after bachelor's and after masters. So if I see the first exam is GATE exam, Graduate Aptitude Test in Engineering. So this test will give access to do research in IITs and NITs. Okay, so I'm repeating it.
These tests will give access to you guys to pursue your PhD in IITs, NITs, and ISC. Okay, ISC Bangalore, which is a prominent institute, which is one of the best institutes in India to do a research. Whether you are doing biology, whether you are doing physics, whether you are doing chemistry, this is one of the best institutes. I think all of you know the C.V. Raman. Okay, the man who got a Nobel Prize in the physics, or I can say in chemistry, scattering of light. So he was studied in there in ISC Bangalore. I took name of Baba, okay, Homi Baba. He also studied in ISC Bangalore. Okay, so I took if you know about the Vikram Sarabhai, he also studied it. He also pursued his teaching in ISC Bangalore. So this is very good institute, ISC Bangalore. And how can you get in ISC Bangalore? By clearing GATE. Okay, another one exam is for pursue PhD in various state universities, or I can say NITs, IITs, is the NET GRF. Okay, National Eligibility Test, and I can say Junior Research Fellowship. So if you clear this exam after your masters, you will be free to do a research in any part of India, guys. In any part of India, whether it is NITs, IITs, you are very free to do a research. Okay, and coming to the last, that is university CET. If you Pune University conducting its own CET, Usmania University is conducting its own CET, Delhi University is conducting its own CET to get the good talent of India to in research. Okay, so these are the exams. I can say 3-4 exams are there for after your bachelor's and after master's. If you are very curious to do a research in PhD, okay, that will open a big, I can say, huge opportunity to you guys to do a research in India and plus in abroad, because many IITs, many NITs, or I can say ISC have good tie-up with the other abroad universities. Like if I say Oxford University, if I say Cambridge University, so they have a very good tie-up, very good, I can say, attached tie-up with the other universities abroad. So yeah, that's from my side regarding the research. If anyone have any doubt, please let me know. Okay, so we'll proceed. Chinmay, that's from my side. If anyone have questions, please let me know. Okay. Okay, fine then. Yeah. Thank you guys for joining this session. Students, I can see today many schools have joined here. JNV Karimnagar, Nalgonda, JNV Enam, etc. So hope you all have noted this exams. Really, I mean, noted the importance of this exam. Okay, and if any queries is there, just let us know. Okay. Thank you, Rahul. Thank you, Chinmay. Thank you, Shubham. Yeah, for making this session a successful one. So hope you guys are. I mean, that's all. That's all from my side. Rahul, you have anything to say? What, sir? You have anything to say for students, or we can close this session? I didn't hear, sir. Can you repeat again? Yeah. Okay. Okay, then we'll end this session here. Okay. Thank you, guys. Next section will be on scholarship, where our Bikesh will be talking about various scholarship options, as I already mentioned in previous class, previous session. So hope to see you guys in the next session. I want a full participation from all the JNVs. Okay. Thank you for joining. You all. Okay, bye. Bye. Bye, Shubham. Thank you, everyone. Bye, Chinmay. Bye, sir. Bye.